भानी देवी गूगल सरस्वती विद्या कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 ग्रेविटेशन। वर्तमान में जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं आप लोगों से वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके लिए लेट F vector 1 2 is equal gravitational force on m1 due to m2 and F vector 2 1 is equal gravitational force on m2 due to m1 and r cap 1 2 is equal unit vector directed from m1 to towards m2 and r cap 2 1 is equal unit vector directed from m2 towards m1. In vector form, Newton's law of gravitation can be written as F vector 1 2 is equal gm1 m2 upon r square into r cap 1 2 and F vector 2 1 is equal g1 gm1 m2 but upon r square r cap 2 1. Since r cap 1 2 is equal minus r cap 2 1, so we can write F vector 1 2 is equal minus g m1 m2 upon r square into r cap 2 1. Therefore, F vector 1 2 is equal minus F vector 2 1. Thus, vector form of law of gravitation tells that the gravitational forces acting between two particles from action reaction pair। अगला जो टॉपिक है इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स के करेक्टरिस्टिक जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला करेक्टरिस्टिक है दीज फोर्सेज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। सेकंड पॉइंट है द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, i.e. दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर। Thus, these forces follow Newton's third law of motion। अगला जो तीसरा पॉइंट है these are central forces because they are act along the line joining the centers of two bodies। फोर्थ पॉइंट है the gravitational force between any two bodies in independent of presence of other bodies and of the properties of the intervening medium। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज दैट फोर्स बाय व्हिच अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर क्लियरली। ग्रेविटी इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। अगला जो टॉपिक है ऐसे रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके लिए when a body is released from a certain height, then
it starts falling towards the surface of the earth. Due to the earth's gravity, due to this force, velocity of the body increases continuously, and thus its acceleration is produced, in its motion. This acceleration is known as acceleration due to gravity, और अथवा acceleration due to gravity is the rate which velocity of a body increases when it falls freely toward the earth. It is denoted by small g. If small m be the mass of the body, then force of gravity F acting on it will be mg, which is equal to the weight of the body. If m is equal 1, then F is equal small g होगा. Thus acceleration due to gravity is equal to the force which is exerted by the earth on a body of unit mass. थैंक यू. इसके बाद आपसे कल डिस्कसिंग किया जाएगा.